We now start with reproductive embryology. यहाँ पे हमारे पास चार important genes आ जाते हैं। एक हमारे पास sonic hedgehog जीन है, एक WNT7 जीन है, फिर एक fibroblast growth factor जीन है और फिर homebox जीन है। अगर हम बिग पिक्चर में बात करें तो यहाँ पे आप लिम्ब डेवलपमेंट की बात करें सबसे पहले, ठीक है। लिम्ब डेवलपमेंट में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं जिसमें हम लिम्ब डेवलप करते हैं। एक एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, जैसे थंब से लिटिल फिंगर तक जाएं तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर है। फिर हम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाते हैं, जैसे शोल्डर से लेके हिप तक, फिंगर टिप से लेके टोज तक। तो ये हम करीब से दूर जा रहे हैं, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जा रहे हैं। फिर हम डॉर्सल टू वेंट्रल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक ऑफ हैंड, जैसे नेल्स और एक्सटेंसर्स वाले पार्ट जो है वो डॉर्सल होता है, और पाम वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे हमारे पास पैड्स और फ्लेक्सर्स हो जाते हैं। तो हमारे पास एक एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन होता है, एक प्रॉक्सिमल डिस्टल प्लेन होता है, एक डॉर्सल वेंट्रल प्लेन होता है। प्लस हमारे पास हॉक्स जीन्स होती हैं। जो हॉक्स जीन्स होती हैं ये एक सेगमेंट आइडेंटिटी कोड की तरह एक्ट करती हैं। So basically, they act as a segment identity code and along the head to the tail axis and within the limb. तो बेसिकली ये क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस पे काम करती हैं और लिम्ब के अंदर भी सेगमेंटल डिफरेंशिएशन कराती हैं। अब हमारे पास तीन प्लेन्स थे जिसकी हमने बात की है। अब जो सोनिक हेजहॉग जीन है ये क्या करती है, बेसिकली आपके पास डॉर्सल बैक ऑफ हैंड से लेके डॉर्सल बैक ऑफ हैंड आप कैसे बताते हो, यहाँ पे WNT7 डॉर्सल एक्टोडर्म होता है। फिर हम लोग बात करते हैं एंटीरियर थंब वाले एरिया की। एंटीरियर टू पोस्टीरियर आपके पास एक एरिया आ जाता है एंड दैट इज बेसिकली टेकन केयर ऑफ बाय द ZPA SH8 gene at posterior base. Then we move on and look at the proximal near body to distal digits, ठीक है, and this is taken care of by the AER FGF8 and FGF4 at the distal edge. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, this may sound confusing at this point but it's gonna get clearer when we talk about it. सबसे पहले हम बात करते हैं SSH जीन की। जो SSH जीन होती है, दिस इज द सोनिक हेजहॉग जीन। यहाँ पे हमारे पास ZPA काम करता है। ZPA का काम क्या होता है, दिस इज द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। So basically, there's a little patch of mesenchyme at the posterior base of the limb bud. ठीक है? So what is the zone of polarizing activity? It's just a little patch of mesenchyme at the posterior base of the limb bud. अब यहाँ पे SHH क्या करता है? SHH ZPA के साथ मिलके लिटिल थंब से लिटिल फिंगर तक एक आइडेंटिटी एक्सिस बनाता है, anterior posterior axis बनाता है। SHH is a morphogen. So basically cells read how much SHH there is and for how long they're exposed. So for example, if you have high or long SHH exposure, आपको पता है कि वो posterior digits बना देंगी। और जो लो शॉर्ट SHH एक्सपोजर वाले एरियाज होते हैं वो एंटीरियर डिजिट्स बनाते हैं, जैसे कि थंब। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखें, ये पोस्टीरियर वाला लिम्ब जो है यहाँ पे आपके ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है, ठीक है। तो SSH क्या करता है कि ये एक मॉर्फोजन ग्रेडियंट बनाता है, ठीक है। पोस्टीरियर लिम्ब बड जो होता है ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लिम्ब बड जो है वो जोन पोलराइजिंग एक्सिस की तरह एक्ट करता है, जोन पोलराइजिंग एक्टिविटी कराता है, ठीक है। Now the mesenchyme receives the SHH signal and the dose and time of exposure से आप decide करते हो कि जीन प्रोग्राम्स में स्विच ऑन होना है या ऑफ होना है। ये ग्रेडेड मैनर में होता है। तो SHH सिग्नलिंग क्या करती है कि जब हाई SHH होता है तो ये पोस्टीरियर आइडेंटिटी ले लेता है। अगर आप देखें तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर और लिम्ब ग्रोथ इस तरह हो रही है, ठीक है। तो जब हाई SHH होता है तो ये पोस्टीरियर आइडेंटिटी करा देता है, और जैसे कि लिटिल फिंगर या फोर्थ फिंगर जो है वो पोस्टीरियर आइडेंटिटी पे क्रिएट होती है, और जो लो SHH वाला एरिया होता है वो एंटीरियर आइडेंटिटी ले लेता है और वो थंब बनाता है। तो SHH is not just thumb, it also patterns the midline of the forebrain early in development. तो SHH जो है वो midline signaling करता है, एंड बेसिकली अगर हम ब्रेन में देखें तो SHH मिडलाइन सिग्नलिंग जब कम होती है तो द फोर ब्रेन फेल्स टू स्प्लिट प्रॉपर्ली, और इसलिए आपको होलोस प्रोसेंसेफली स्पेक्ट्रम मिलता है, मिडलाइन फेशियल या ब्रेन डिफेक्ट्स मिलते हैं। अब हम एक और जीन की बात करते हैं, ये WNT7 जीन है। ये क्लासिकली इसको WNT7A कहते थे। ये बेसिकली डॉर्सल और वेंट्रल का जो एक्सेस है ये इसमें क्लियर कराती है। तो जो डॉर्सल एक्सेस होता है इस द टॉप सरफेस ऑफ द लिम्ब बड। WNT7 या WNT7 जो जीन होती है
इट कम्स फ्रॉम द डोर्सल एक्टोडर्म और ये सिग्नल करती है अंडरलाइंग मीसेनकाइम को इट टर्न्स ऑन अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम होता है LMX1B। तो WNT7A मीसेनकाइम में नीचे जाती है और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ऑन कर देती है और वो LMX1B होता है। अब दिस मेक्स द टिश्यूज बिकम डोर्सल लिम्फ फीचर्स। जितने भी डोर्सल लिम्फ फीचर्स हैं ये इसके थ्रू डोर्सल पैटर्निंग कराते हैं। ऑन द अदर हैंड वेंट्रली पैटर्न्स कैसे बनते हैं? वेंट्रल मीसोडर्म में आपके पास EN1 जीन होती है। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन वेंट्रल एक्टोडर्म एंड इट सप्रेसेस द WNT7A ventrally. That preserves a ventral identity in the palm, sole pads, and flexor sides. So the dorsal ectoderm produces WNT7A. This mesenchyme receives a WNT signal, and the LMX1B transcription factor becomes turned on. On the dorsal, that's when the dorsal plate is specified, and you get nails, extensor side, and dorsal patterning. Then we have the ventral mesoderm. Ventral side पे EN1 present होता है। EN1 जो है वो WNT7A को ventrally repress कराता है, तो ventral fate present करता है, which where you have the palm and flexor side. Then we have a fibroblast growth factor, AERBs कहते हैं, and this drives the limb lengthening.